Hello students, this is live session for class 10th. लास्ट हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया था और एक क्वेश्चन पेपर हमने जो प्रीवियस ईयर का उसे सॉल्व किया और उसे राइट नाउ इट इज अपलोडेड. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे एंड द क्वेश्चन पेपर यहां पे हमने लिखा है दैट इज द सीरीज जो इस बार आज हमने स्टार्ट करनी है. द सीरीज इज गिवन द सेट 1, द QP कोड इज 32(1) एंड इट इज ऑफ स्टैंडर्ड. आज सेक्शन ए MCQs को हैंडल करेंगे और देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में पिछले साल इट इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ जो इस साल 25 का जो मार्च में हमारा पेपर हुआ और एज वेल एज 24 का जो मार्च का पेपर है हम उसको फोकस कर रहे हैं. दिस इज द क्वेश्चन पेपर दैट अपीयर दैट कम इन 25 यानी इसी साल मार्च में एक सेट आया. अब किन बच्चों को आया दैट इज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. हम जैसे हमने स्टार्ट किए लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने का जो हमने डिसीजन लिया कि हम आने वाले जो एग्जाम 26 में मार्च में होंगे सो दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम एनालाइज कर सकें कि हमारी अपकमिंग एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हैंडल करने का एक इम्पोर्टेंस ये भी रहती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस रहते हैं या हमें आइडिया हो जाता है कि किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हम अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं. तो आज हम सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे दैट इज ऑफ MCQs एंड ऑन योर स्क्रीन is so look at the first question of MCQ and the first question is which of the following quadratic equation has sum of its root as 4. नीचे लिखी हुई कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का जो सम है वो 4 होगा. तो यहाँ पे देयर आर 4 ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ. हमें किस तरह से इसका आंसर मिलेगा? So look at the option B. जो ऑप्शन बी है हमारे पास एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन -x² + 4x + 4 = 0. सो सम ऑफ द रूट्स किस तरह से होते हैं? जैसे आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में इसको देखा, द सम ऑफ द रूट्स से द अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स. So sum of the root is like this, which is -b/a. According to the a is -1, b is 4 and c is 4. तो यहाँ से the value of b is 4 and the value of a is -1, 4. तो हमसे यही पूछा गया था कि नीचे लिखी 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से सम ऑफ द रूट 4 किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनता है? तो ऑप्शन जो बी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें सम ऑफ द रूट इक्वल्स टू 4 बता रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में एंड द स्टेटमेंट इज देयर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद द रेडियस
So there is a radius is given 14 and the central angle is 90. इसे ड्रॉ करेंगे. द इंफॉर्मेशन इज, हमें लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करनी है. द लेंथ ऑफ द आर्क अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, एक सर्कल जिसका रेडियस हमें गिवन दे रखा है एंड द सेंट्रल एंगल, ये आर्क जो सेंट्रल एंगल बना रही है दैट इज ऑफ 90. सो द लेंथ ऑफ द आर्क is equals to the angle between the radius upon 360 circumference of the circle. The angle is 90 upon 360, 22 by 7, the radius is 14. This is 94 the 360, 7 to the 14, 2 to the 4 and the length of the arc ये जो है is 22 centimeter. And see which option is correct. Is option A. Option A is the right answer for the question number 2. Now move to the question number 3. And the question number 3, the statement is, there are two similar triangles having angle A 32 and as well as in the PQR angle A is 32 is given as well as angle R is 65 and need to find angle B. What is the measure for angle B? Angle B क्या होगा, हमें ये ढूंढना है. See the options 32, 65, 97 and 83. Let's see which option is the correct for the given problem. So there is the two triangles which is already given that ABC and PQ are the similar. If they are similar triangles, then clearly this angle C is equals to R. तो ये भी 65 हो जाएगा. Now the angle sum property का इस्तेमाल करेंगे. Angle A, angle B, angle C is 180, A is 32, B हमें चाहिए and angle C is 65 is equals to 180 degree. B इन दोनों का सम which is equals to 5 plus 2 7, 6 plus 3 9. Now the angle B 180 minus 97. So what will be the 180 minus 97? $83 and the option, correct option number is, yes, option C is 83 is the right answer for the number 3. Next, number 4, and the statement for the number 4 is P and Q are the natural numbers where P is the multiple of Q. तो इसको एक एग्जाम्पल की तरह से इसका आंसर निकालेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. So here P is the multiple of Q, then what will be the HCF of PQ? इस तरह का क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हर फाइनल एग्जाम में ये देखा जाता है, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है. जैसे इस बार पूछा गया दैट P is if multiple of Q, P is the multiple of Q, then what will be the HCF of these two numbers? So here P is a multiple of Q. Multiple of Q stands for कि अगर से
क्यू बी एनी नंबर, लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे 14 को मान लेता हूं, दैट द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू 4, देन p विल बी द मल्टीपल ऑफ क्यू। तो p क्या हो सकता है, फ्रॉम द टेबल ऑफ 4 आप कोई भी नंबर देख लीजिए, लाइक 4 2 8, 3 12, 4 4 16 या 20। अब नंबर से p इज इक्वल्स टू 20 विच इज द मल्टीपल ऑफ 4। सो यहां पे हमें HCF ऑफ PQ निकाल के दिखाना है। सो द व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर Q के prime factors 2 raised to power 2 and the p is 2 raised to power 2 into 5. So clearly HCF, this is the common number with power 2. So HCF is 2 raised to power 2 is 4 and 4 is Q. So if p is a multiple of q, आप कोई और नंबर भी इस तरह से डिसाइड करके देख सकते हो, आपको इसी तरह से आंसर q, जो भी आप q डिसाइड करोगे वो आ जाएगा। आप चाहे 3 का मल्टीपल ले लो, चाहे आप 5 का ले लो, चाहे आप 6 का ले लो, तो आंसर विल बी द q इफ p इज अ मल्टीपल ऑफ q, देन q इन दोनों का HCF इज ऑलवेज कम्स आउट q। सो लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज q, जो है कौन से ऑप्शन पे है। तो q इज ऑप्शन नंबर C। यस, C is the right answer for the question number 4. Next जो है the number 5 and the statement आपके सामने है। And the statement is the coordinate of the coordinates of the vertices A of a rectangle ABCD whose 3 vertices are given। तो यहां पे इसको पहले बनाते हैं, इसको हम दो तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, लाइक 2 ways, बिकॉज इट इज MCQ। हमें कोशिश करनी है कि जितने कम से कम टाइम पर इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। सो लाइक वेरी फर्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ A, B and C and D are, the coordinate of A is given, okay, हमें निकाल के दिखाना था coordinate of A and the coordinate B is equals to 0 0, that is on the origin, C is 3 0 as well as the D is 0 4। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये प्रॉब्लम है। लाइक वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स एंड वाई। द कोऑर्डिनेट ए हमें निकाल के दिखाना। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायगोनल, इसकी मदद से आगे चलेंगे। Like this is O, this is a midpoint of AC with the help of midpoint formula, x plus 3 upon 2, y plus 0 upon 2, like this. Again, this O is a midpoint of DB with the midpoint 0 plus 0 upon 2 and 4 plus 0 upon 2। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट द बोथ बिकॉज रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट, x plus 3 upon 2, y upon 2 is equals to 0 and 4 by 2 is 2। Now compare the x-axis point is equals to 0, y-axis point is equals to 2। From here the value of x cross multiply -3 and 4। The point A will be -3 and 4। अब यहां नीचे ऑप्शंस में देखते हैं इसको, आपके सामने ऑप्शंस में रख रहा हूं। लुक एट द ऑप्शंस, लुक एट ऑप्शन नंबर A 4 0 0 3 3 4 and 4 3। तो यहां पर जो हमारा आंसर है -3 4 है एंड यहां पर ऑप्शन सी है तो है, यहाँ पे माइनस को उसने नहीं दिखाया। और एक्सेप्ट इन
सी को छोड़कर ए, बी एंड डी क्लियरली इसके आंसर नहीं बन सकते। सो यहां पर हम ऑप्शन सी को ही चुनेंगे। यहां पर -3 लिखना चाहिए था, so it can be a mistake or misprinting, but question number 5 के लिए option C -3 4 be the possible answer for the problem number 5. Now see the question number 6. Okay, as I said that we'll do this question number 5 with two different ways. Even how we can think, अगर ये प्रोसेस लाइक इसे कैलकुलेट किया हमने, तो ये एक जनरल मेथड है। बट यहां पर अगर इसके कोऑर्डिनेट्स को देखें तो कोऑर्डिनेट्स को देखकर हम इजीली इसके आंसर को ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय, बिकॉज इट्स एमसीक्यू। ये एक्सप्लेनेशन उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आंसर चाहिए, ऑप्शन सी। तो यहां पर देखिए बी इज द ओरिजिन, हियर इज द बी ओरिजिन, and the next point C 30 positive x-axis 1 2 3, so this is 30 and the point is C. The next point D is a positive 0 4 positive of y-axis 1 2 3 4, this is 0 of 4, the point D, तो ये B है। सो हमें ये क्वाड्रिलेटरल जो बनाना है पैरेललोग्राम टाइप, दिस वन बी सी एंड दिस इज डी। तो क्लियरली इफ इट इज अ पैरेललोग्राम तो यहां पर इसका जो पैरेललोग्राम का ए पॉइंट कहीं यहां पे होना चाहिए, तो उसके कोऑर्डिनेट हम यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज ये लाइन हमें पैरेलल चाहिए इस तरह से। तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहां पे इसकी लेंथ 3 है तो इसकी लेंथ भी 3 होनी चाहिए, 1 2 and this is 3 and this point is minus of 3 0, तो accordingly इस पॉइंट का x एक्सिस -3 बनता है and this is parallel to the x axis and intersect y axis at 4, तो 0.4। तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं that the point A is -34 is the easiest way। आप अगर ये कैलकुलेशन नहीं दिखाना चाहते तो इस तरह से भी हम कोऑर्डिनेट A को फाइंड आउट कर सकते हैं। Now move to the next one. The question number 6, which is the pair of the, now this is chapter number 3, यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमें बताया गया है। So the pair of the linear equations are, the first one pair is 3x minus y plus 8 is equals to 0 and the second one is 6x r into y plus 16 is equals to 0. For this pair of equation we need to find the value of r when the given is the lines are coincident lines. The given is lines are coincident। तो चैप्टर नंबर 3 में हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है। कोइंसिडेंट लाइन स्टैंड्स फॉर लाइन ओवर लाइन, लाइक दिस। दिस इज द कोइंसिडेंट पेयर। तो इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन रहती है a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. So from here the value of a1 is and a2, b1 is minus of 1 minus of r, this is 8 by 16। r की वैल्यू चाहिए, चाहे यहां से निकाल लीजिए चाहे यहां से निकाल लीजिए, वैल्यू सेम ही आएगी हमारे पास। दिस इज 1 by r, 3 by 6 and 2, कंपेयर करेंगे द वैल्यू ऑफ r कम्स आउट 2। यहां से भी देख लें 1 by r, दिस इज 8 by 16, अगेन 1 by 2, ऑन कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ r 2। सो हमसे पूछा गया था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r फॉर these two pair of lines when
the given lines having condition, they are coincident. So R is 2. Let's see the option. Where is the 2? On which number? So here the 2 is on the number D. Fourth option is correct for the problem number 6. Next, look at this, is number 7 is of the probability. Number 7 is of probability. The chance of occurrence is equals to favorable case upon total number of cases. तो यहाँ पर according to the problem, there is a bag with 100 cards. Over the cards, 1 to 100 is written on each card. 1 2 3 सीक्वेंस में लिखे हुए हैं. हर कार्ड के ऊपर एक नंबर है. A card is drawn at random. आपको रैंडमली एक बैग में से कार्ड निकालना है और कार्ड वो होना चाहिए लाइक परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए. वो नंबर जो हम निकालें दैट इज द परफेक्ट क्यूब हो. व्हाट इज द चांस फॉर दैट? So here there is a box number 7. There are the cards and each card having like this number 1 2 3 and the last number is 100. इस तरह से इस बॉक्स के अंदर कार्ड्स हैं. हमें एक कार्ड निकालना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड कम्स आउट ऑफ हैविंग नंबर परफेक्ट क्यूब. सो यहाँ पे टोटल कार्ड्स 100 है. फेवरेबल देखना है कि हमारे कितने परफेक्ट क्यूब बनते हैं 1 से 100 के बीच में. सो 1 का क्यूब, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 क्यूब इज 125. चलिए अगर हम 5 का निकालते हैं तो 125. इट मींस इट इज मूव बियॉन्ड और अहेड 100 से आगे चला गया नंबर जो हमें नहीं चाहिए. हमें 1 से 100 के बीच में बात करनी है. सो 1 2 3 4 दीज 4 कार्ड्स, इन 4 कार्ड्स के आने की संभावना हमसे पूछी जा रही है. तो देयर आर नंबर 4. हमारा फेवरेबल नंबर्स यही चाहिए हमें 4. देयर आर 4 इन नंबर्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 by 100 और 1 by 25 is the answer for this number 7. Let's see where is the which option is and on which number it present. Is on number C, 1 by 25. Number 7, look at this number C is the answer for the number 7. Now for the 8, the pair of equation like x equals to a and y equals to b ग्राफिकली रिप्रेजेंट हमें करना है कि नीचे लिखी हुई 4 ऑप्शंस में से विच ऑप्शन करेक्ट फॉर दीज 2 गिवन थिंग्स. सो हियर x इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b. सो पहले तो ये पता होना चाहिए कि x इस नंबर्स को हम कैसे ग्राफिकली प्लॉट करते हैं. अभी तक वी आर ऑन द एज ऑफ द ईयर ऑफ क्लास 10th. सो आई होप यू पीपल नो कि इसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है ग्राफ में. सो नंबर 8, हियर x इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b. देयर इज अ ग्राफ. सो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू a कैन बी, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लगा लेते हैं. दिस इज द x इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेट a और a0 इस तरह से. सो x इक्वल्स टू a इज ऑलवेज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. Remember these things. It is all about to understand easily. So x equals to is parallel to the y axis because it is a positive. That's why we draw this line parallel over the positive of x axis, and y equals to b is the positive of the y axis. Positive number. It could be like approximate randomly यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. तो remember the y equals to b, the intersecting point of y axis is 0b and the line drawn y equals to b is this one and x equals to a this one. So the intersecting point for the a
and this is B. So this is the intersecting point. So ये आपके पास ग्राफ है. Let's see इस ग्राफ को देखते हुए which option out of the like the answers देखते हैं यहाँ पर. इसके अकॉर्डिंगली क्या आंसर बन सकता है. पैरेलल तो दोनों लाइनें नहीं है, क्लियरली इंटरसेक्ट कर रही है. तो इंटरसेक्टिंग एट बी ए, नो बी ए पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा. कोइंसिडेंट लाइन ओवर लाइन जैसे लास्ट मैंने बताया वो भी नहीं है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इज इंटरसेक्टिंग एट ए बी. दैट द ऑप्शन डी जहां पर लिखा हुआ है दैट दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट ए बी. So the answer is D. Answer D. There is an intersection point of these two line at AB. So this is the number, I think 7th question is this. 8th question is this. Now move to the next 9th one. And the statement for the 9th is, if 1 0 of the polynomial 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal to the other with this condition, what will be the value for, यहाँ पर एक there is a k रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू द जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हुई है, दैट इज द 6x square plus 37 and minus of k minus 2. Minus of k minus 2 is the quadratic equation. One root is reciprocal. See the options, minus 4, minus 6, 6 and 4. Let's see what possible answer is come for the given problem. So 6x square plus 37x minus k minus 2, one say the one root is this alpha, second is the reciprocal of it, तो दूसरा इसका reciprocal 1 by alpha. तो यहां से what will be the a 6, the b is the middle term 37 and the c is minus of bracket k minus 2. तो प्रोडक्ट आपको याद होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जीरो इज इक्वल्स टू लाइक दिस. हमारे पास यही है, एक अल्फा है दूसरा 1 बाय अल्फा. प्रोडक्ट इज c अपॉन a. दिस अल्फा एंड अल्फा कैंसिल 1. द c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k माइनस 2 एंड a इज 6. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. This is minus k minus 2 is equals to 6 minus k plus 2 is equals to 6 implies is minus k 6 minus 2 minus k 4 and the value of k is minus 4. See on which option is minus 4 is A. 9th one, option A, minus 4, the value of k. Number 10, what is the total surface area of the hemisphere with the diameter d? तो डायमीटर d है. आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन में भी आंसर इन टर्म ऑफ d दे रखा हुआ है. इस तरह के क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम हमने आंसर्स निकाले होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर हमारे पास नंबर्स होते हैं, लाइक नंबर कुड बी डायमीटर की वैल्यू दे रखी होती है कुछ ना कुछ, तो वहां से. बट स्टिल ही सेड इफ द डायमीटर इज d, it is about the hemisphere, it is about hemisphere, solid hemisphere. तो सॉलिड हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको. सो हियर द रेडियस विच इज हाफ ऑफ द डायमीटर, इट इज अ सॉलिड, तो इट्स surface area is asked
One is this curve portion, which is 2 pi r square, and upper circle is pi r square. So total surface area is 3 of pi r square. The value of r is d by 2. Substitute d by 2 in place of रेडियस, और रेडियस की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दिस इज 9 by 3 by 4 pi d स्क्वायर. इन टर्म ऑफ डी आंसर कुछ ये होना चाहिए. सी द ऑप्शंस. विच ऑप्शन इज like 3 by 4 pi d square. This is the total surface area. Option D is the right answer for question number 10. For 11, and the statement for the 11th question is yet there 3 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at most one tail? So let's see how we can present the answer for the such type of the problem where the 3 coin tossed. So again see the probability. This is the second question comes for the section A of the probability. तो यहाँ पे ध्यान रखिए, एक से ज्यादा क्वेश्चन ही प्रोबेबिलिटी के सेक्शन ए में पूछे जाते हैं. So 11-1 the 3 coin toss. वेरी फर्स्ट 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस आपको तैयार करना होगा, या आप कह लीजिए टोटल आउटकम्स सैंपल स्पेस, और यू कैन से टोटल आउटकम्स. तो इस तरह से इसका सैंपल स्पेस बनेगा 3 कॉइन्स का. This is the easy way to make a sample space for 3 coins. और आप चाहे 4 coins का भी पूछा जाए तो इस तरह से आप 4 coins का भी sample space तैयार कर सकते हैं. There is a sequence of making like 2 coins, 3 coins, 4 or 5 number of coins, but most of the time 3 coins का ही पूछा जाता है या 2 coins का. तो यहां पर हमें बोला गया है we need to find the probability that outcomes जो होने चाहिए at most tail. Let's see, एक बार फिर से देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोला गया है. that the probability of getting at most one tail, at most one tail. Total 8 cases are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. At most one tail, इसको अंडरस्टैंड करें. What is the meaning of the at most one tail? ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए और 0 टेल भी चलेगा. तो यहां पर देखते हैं विच ऑप्शन जहां पर सिर्फ एक टेल प्रेजेंट है. 1, here is single tail. 3, एंड दिस ऑप्शन ऑल्सो इंक्लूडेड एट मोस्ट में ज्यादा से ज्यादा एक और 0 टेल, मतलब ऑल द हेड पॉसिबिलिटी ऑल्सो कम्स इन एट मोस्ट. यहां पर 4 ऑप्शंस, 4 फेवरेबल चांसेस हैं. इधर 1/2 और 4/8 बी द आंसर. लेट्स सी विच ऑप्शन, किस तरह से आंसर है इसका और कहां पे प्रेजेंट है ये. ओके, 3/8 इज नॉट. तो 1/2 तो कहीं भी दिख नहीं रहा. ओके, ऑप्शन बी देखिए 4/8 यानी 1/2. सो ऑप्शन बी इस तरह से भी मतलब लिखा हो सकता है, ध्यान रखिएगा. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द 11. नाउ नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एंड द स्टेटमेंट. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सॉरी, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 सिमिलैरिटी से दिया गया है ये क्वेश्चन, जहां पर हमें गिवन है देयर इज अ ट्रायंगल विद द डायमेंशंस विद द लेंथ्स, रिस्पेक्टिव लेंथ्स. तो हमें अननोन लेंथ फाइंड आउट करनी है. देयर इज ABC ट्रायंगल नंबर 12. ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ABC एंड देयर इज अ लाइन
DE and the given is DE is parallel to BC, ये गिवन दे रखा हुआ है एंड लेंथ्स आर जैसे शो करी हुई है लेंथ 2 3 3 एंड x। क्लियरली एक अननोन नंबर यहाँ पे है, अननोन लेंथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑप्शन है हमारे पास 2 3 5 and 9/2। let's see which option is correct for the answer because it is a parallel, ये given है, इसके बिना हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अगर ये पैरेलल दिया होगा तभी हम कॉरस्पॉन्डिंग बाय द थेल्स थ्योरम या बीपीटी की वजह से द रेशियो हम इस तरह से बना सकते हैं AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC। तो लेंथ ऑफ दिस वन जो गिवन है यहाँ पे रखेंगे बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 309 एंड बाय 2, सो द वैल्यू ऑफ x इज 9/2। क्लियरली ऑप्शन डी में हमने देखा था, द ऑप्शन डी जहां पर 9/2, दिस इज द आंसर फॉर द